कॉन्सोनेंस। अब जब बात रेपिटेशन की चल पड़ी और जहाँ वावल्स रिपीट हो सकते हैं वहीं कॉन्सोनेंट साउंड्स भी रिपीट होते हैं। As I have discussed one example with you before the talk, before the start of the lecture, that all the breath and the bloom of the year in the bag of one bee, all the wealth and wonder of the mind in the heart of one gem. So in the first line, we see there is in the first part, not only in the first part but in the second part as well, that we see that there is a repetition of two consonant sounds, and they are being repeated at the beginning. Va as well as va sounds as sound as well as ba sound. Those sounds वहाँ पे repeat हो रहे हैं. So since they are being repeated at the beginning, so we say that the poet is creating an alliterative effect by using these two sounds, by repeating these two sounds, as well as these are the examples of consonants as well, because ये consonant sounds repeat हो रही हैं. So जब हम consonant sounds की बात करेंगे, repetition की बात करेंगे, that is within a group of words or literary work like this one. Repetition को देखें, यहाँ पे ये example है आपके सामने. It will creep and beep while you sleep. So in all cases we see pa sound is repeated. It will creep and beep while you sleep. So at the end ये repeat हो रहा है. And as I told you that it can be repeated at the beginning, it can be repeated in the middle, it can be repeated at the end. So another example, mammals named Sam are clammy. यहाँ पे repetition आप देख सकते हैं मा sound की हो रही है, but that is in the middle. But repetition consonant sounds की हो रही है. There is one example written, a poem written by Shell named as Invitation. So you can see here, if you are a dreamer, comment if you are a dreamer, a wisher, a liar, a hoper, a prayer, a magic bean buyer. If you are a pretender, come sit by my fire. For we have some flocks golden tales to spin, come in, come in. So in this stanza, you can see ra sound is being repeated in almost all the lines except the last one. ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात हो रही है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो वो रिपीट हो रहे हैं. एलिट्रेशन की तरह कॉन्सोनेंट साउंड के अंदर भी वी रिपीट द साउंड्स. ठीक है, एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स दे आर बोथ ऑन द बेसिस ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड्स, बट टाइप्स ऑफ रिपीटिंग क्या है कि कॉन्सोनेंट्स के अंदर क्या है, रेपिटेशन में सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं एंड एज वेल एज एलिट्रेशन में क्या है कि वो वाउल की रिपीटिशन भी हो सकती है, कॉन्सोनेंट की भी हो सकती है. दूसरी बात पोजीशन की है कि साउंड कहाँ पे रिपीट होते हैं. कॉन्सोनेंट में दैट कैन अकर एनीवेयर इन अ वर्ड, जबकि एलिट्रेशन में दे मस्ट अकर इन द फर्स्ट सिलेबल ऑफ वर्ड्स और इन द स्ट्रेस सिलेबल ऑफ वर्ड्स, पहले सिलेबल के अंदर होंगे. सो प्रैक्टिकल टर्म्स में आप ये कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो बाज़ दफ़ा एलिट्रेशन की फॉर्म हो सकती है, बट इज़ेंट ऑलवेज. सिमिलरली एसोनेंट्स कैन बी अ फॉर्म ऑफ एलिट्रेशन बट नॉट ऑलवेज. ठीक है, तो ये बात समझ आ गई आपको कि जब कोई वर्ड बिगनिंग में रिपीट होगा तो हम उसे बोलेंगे ये तो एलिट्रेशन तो होगी, इट इज़ क्रिएटिंग एन एलिट्रेटिव इफेक्ट. अब उसको देखें, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो आप कहेंगे एलिट्रेशन भी है और वो कॉन्सोनेंट्स के ज़रिए है. वाउल है तो उसके ज़रिए है, एसोनेंट्स के ज़रिए है. सो we can see two examples at the screen, that consonant and as well as they are having alliterative effect in the first one, whereas in the second one we see that there is a consonance but it is not creating an alliterative effect, rather this is just a consonance. So you can see here, be back soon, Barry, bye bye. Did Dan got Madeline, he was doing his duty, oh well, conduct him to the stage. So in this case, two sound ba and da, they are being repeated. So we can say that this is an alliteration, that we are having repetition of a same sound, but that is at the beginning. Then there is consonants, just consonant. Tiffany's offensive remarks disturbed Jeffrey and other staff members. तो यहाँ पे fa sound repeat हो रही है, but that is not being repeated at the beginning, so we'll just say this is consonants.
यही डिफरेंस है इनके अंदर. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस आइडिया. अगर आप किसी भी एग्जाम्पल को अलाउड पढ़ेंगे सो you will sense it that both have repeating consonant sounds, alliteration and assonance. But example, when they are alliteration, they'll be having some type of a rhythm. All the breath and the bloom of the year and the bag of one bee. जबकि नॉन एलिटरेटिव कॉन्सोनेंट्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती. रिदम, एलिट्रेशन का काम ही है टू क्रिएट द रिदम, ठीक है. सो कॉन्सोनेंट की एग्जांपल पढ़ने के बाद आप ये देख सकते हैं कि देर आर सम एग्जांपल्स, some consonants they are not alliteration, but there are some consonants which are alliteration as well. So when they are alliteration, they are creating a rhythm. When they are non-alliterative, then they lack rhythm. ठीक है, यही चीज़ assonance के अंदर भी है. alliteration का काम ही है कि वो पोम के अंदर रिदम क्रिएट करता है. जब हमने पहले बात की थी कि पोम जो है दैट इज़ क्रिएटेड ऑन रिदमिकल पैटर्न्स, मेट्रिकल composition है, and that is created on rhythmical patterns. So definitely it should have these device of alliteration to create a rhythm. जब आप rhythm की बात करेंगे, rhyme and rhythm की आपने बात की, आपने rhyme scheme निकाली, A B B C C D D, इस तरह जब आपने उसको निकाला तो यहाँ आपने क्या किया, you talked about that how the poet is creating the rhythm. You have to trace it. क्या पोएट रिदम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो कैसे कर रहा है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट consonants, and I hope that you've understood the topic. And if you face any problem while understanding it, you can keep your question for the live session and must ask me there.